Hello students, I welcome you all to the platform of StudyIQ. In today's class, I will be making a discussion about the previous year's questions asked in social issue section, that is a part of GS paper 1. In 2021, a question was asked in question number 8 related to uh, sexual minorities. Who are the sexual minorities in India? That is LGBTQ. L stands for lesbian, G for gay, B for bisexual, T for transgender, Q for queer. ओके क्वेश्चन टा एमती थिला देखो मु लिखि देछि ऑलरेडी क्वेश्चन से कहूची व्हाट आर क्वेश्चन टा होची व्हाट आर some of the recent legal pronouncement related to the rights of the sexual minorities in India. Sexual minorities in India कहले आमे आम मन को आसे ए माने हेले sexual minority LGBTQ. L for lesbian, G for gay, B for bisexual, T for transgender, Q for queer. LGBTQ को नहीं कि कौन सब लीगल प्रोनाउंसमेंट है अर्थात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन सब जजमेंट देइछंती रिसेंटली LGBTQ की नहीं कि से क्वेश्चन पड़ी से क्वेश्चन ना आंसर तमे केमिति लिखिबो पिला माने LGBTQ को नहीं कि पांचटा इंपोर्टेंट जजमेंट आसीची बा पांचटा लैंडमार्क स्टेप निया जाइची कौन से पांचटा सॉरी चारिटा लैंडमार्क स्टेप निया है कौन से चारिटा ना फास्ट होची रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स राइट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 मसीहा 2024 मसीह रे सुप्रीम कोर्ट गोटे केस डिसाइड कले जोठी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लढुथिले सेठी ट्रांसजेंडर मानकर राइट टाकू रिकॉग्नाइज कराहला तापरे 2017 मसीह आउ गोटे जजमेंट आसिला सुप्रीम कोर्ट रे कौन राइट टू प्राइवेसी ऑफ सेक्सुअल ऑटोनॉमी ए केस रो ना होची केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1917 मसीह 14 रे फर्स्ट आसला 17 आउ गोटे सेकंड जिंस आसला थर्ड को आसो थर्ड हला 2018 मसीह रे decriminalization of homosexuality जो केस रे डिसाइड करा गला ता ना होची नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जे आगुरु होमोसेक्सुअल एक्टिविटी टाकू गोटे क्राइम बोली की कंसीडर करा हला गोटे क्रिमिनल एक्शन बोली की कंसीडर करा हला किंतु 2018 मसीह रे एटाकू डिक्रिमिनलाइज करा हला कोहला जदी कंसेंट को नै कि होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज होची that is also legal, that is not illegal. So that is in this way British period रो जोटा को क्रिमिनलाइज करा हैतला होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप की 2018 मसीह रे सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट रे ताकू डिक्रिमिनलाइज घोषणा करा हला तापरे 2019 मसीह रे लास्ट आसिला लैंडमार्क जजमेंट लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसजेंडर मानकर डिस्क्रिमिनेशन टाकू बंद करा हबो एवं तांकू प्रोटेक्शन दिया हबो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 हला ए चार्टर लैंडमार्क जजमेंट आसीची सेक्सुअल माइनॉरिटी देश रे हमर जो माने अछंती तांकू नै कि मो ऑलरेडी लिखि देइची रिसेंट लीगल प्रोनाउंसमेंट इन इंडिया have marked significant advancement in recognizing and protecting the rights of sexual minorities. Here are some key legal development. ये चार्टा जो डेवलपमेंट है एठी मु लिखि देछि पूरा पॉइंट करिकी फर्स्ट हला रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 मसीह रे एठी कोन हला देख लिखिछि इन ए सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑन April 15 2014 the Supreme Court recognized the rights of transgender people by ruling that they have the right to self identity
to identify, self identify their gender as male, female or third gender. पिला माने 2014 मसीह सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देले से जजमेंट रे कहला ए जो ट्रांसजेंडर बा जहाँ को आम यूनक इंग्लीश रे कहते ओडिया और हिंदी रे कहते हिंजड़ा बोलिकी जे सेमानकर राइट अच्छी से निजको डिक्लेयर करेंगे सी निजे निजको मेल फील करुँच कि फीमेल फील करुँच कि से ट्रांसजेंडर बोलिकी फील करुँच से माने ही निजे सेल्फ डिक्लेरेशन देबे. द कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स guaranteed under the Constitution of India, including the right to equality, non-discrimination and freedom of speech, apply equally to transgender people. This judgment mandated the government to treat transgender people as a socially economically backward class. Transgender मानकु socially economically backward class SCBC मान्यता मिलिला, allowing them to access reservation in education and employment. हला SCBC मान्यता मिलिला एवं तांका लगी रिजर्वेशन रहिला एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रे. सेकंड को आसा, सेकंड ना होची राइट टू प्राइवेसी एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी. जे प्राइवेट लाइफ रे चारि कांथ भितरे जने कहा संगे रिलेशन रखिबो, गोटे पुओटे पुओ संगे रिलेशन रखिबो कि झियटे झियट संगे रखिबो कि पुओर इच्छा हला पुओ झियो उभय संगे रखि परिबो, तार से राइट अछि. एटा से जजमेंट रे कहैछि राइट टू प्राइवेसी एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी. जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 मसीहार डिसीजन एटा was the Supreme Court's judgment in the Justice K.S. Puttaswamy case in 2017, which affirmed the right to privacy as a fundamental right under Indian Constitution, had significant implications for the rights of sexual minorities. The judgment held that sexual orientation is an essential attribute of privacy and the protection of sexual orientation lies at the core of the fundamental rights to equality and dignity. The ruling provided a strong foundation for subsequent decriminalization of homosexuality under section 377 of IPC. पिला माने से कहूची सेक्सुअल ओरिएंटेशन टा गोटे लोकर प्राइवेट लाइफ रे रहिबो, तेणु तार जहाँ आड़ को ओरिएंटेशन रहिबो, पुओटे चाहिए पुओ संगे सेक्स करि परिबो, झियटे चाहिए झियो संगे सेक्स करि परिबो. हला एटा तार प्राइवेसी भितर को आसुची, तेणु आकु नहीं तार सब प्रकार राइट्स अच्छे जिनस करिया पई. तेणु एठी आसीगला आगु को जो मु कहबी 377 को डिक्रिमिनलाइज कराहला, एई जजमेंट ता ही तार फाउंडेशन पकेइथला. ओके, नेक्स्ट को आस डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एटा कहली एटा हला फाउंडेशन, एटा तार सुपर स्ट्रक्चर. कौन एठी कहूची देख, एठी कहूची इन ए लैंडमार्क जजमेंट ऑन September 6, 2018 the Supreme Court of India decriminalized consensual homosexual act among adults by reading down section 377 of IPC. IPC कहे homosexual act crime, एटा को रीड डाउन करा हला माने उठे दिया हला, हटे दिया हला. दिस सेक्शन एक कॉलोनियल इरा मु कहि जे एटा कॉलोनियल ब्रिटिश पीरियड रो थला, हार्ड क्रिमिनलाइज्ड कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर. आगुरु भाबुथिले ब्रिटिश समय 2018 मसीहा पर्यंत आमे भाबुथिले केवल नेचुरल सेक्स होची पुओ झियो भितर सेक्स, किंतु एठी कहला नाही पुओ पुओ भितर सेक्स भी नेचुरल, झियो झियो भितर भी सेक्स नेचुरल. इवन गोटे पुओ झियो संगे सेक्स करि परियो, पुओ संगे भी सेक्स करि परियो, सेटा भी नेचुरल. किंतु काहक से बाध्य करू नाही, कंसेंट बेसिस रे जदी सेक्स होची दैट इज नेचुरल. कारण प्रत्येक लोककर सेक्सुअल ओरिएंटेशन समान नुहे. ए कथा कहि कि सुप्रीम कोर्ट हटै दला एटा को, which was widely interpreted to include homosexual relations. The Supreme Court's unanimous verdict declared that section 377 was unconstitutional to the extent that it criminalized consensual sex between adults of same sex.
This judgment was a historic step towards the recognition of the rights and dignity of the LGBTQ community in India. तापर लास्ट को आस, लास्ट होची लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये जो LGBTQ बा जो मानको आमे ट्रांसजेंडर कहउचंती बा जो मानको आमे सेक्सुअल माइनॉरिटी कहउचंती तांको विरुद्ध रे किछि डिस्क्रिमिनेशन ही परिबो नाही, तांको प्रोटेक्शन लॉ तरफ दिया हबो। एक कथा आसला कोठी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 रे आसला। एठी मु लिखिछि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 was enacted to protect the right of transgender individuals in India. This law prohibits discrimination against transgender persons in such areas as employment, education, healthcare, access to public good and services। पिला माने जेतेबेले थर्ड जेंडर रो लोक माने आगुरु स्कूल को जाऊ नथिले, पिला माने कहीं जानती जे कौन सेठी कहबे से मेल ना फीमेल, देह खराब हेले निहाती क्रिटिकल नहले से हॉस्पिटल को जानती कारण पब्लिक रे तांको ह्यूमिलेट करा हुए। से माने कोनोसी दुकान बाजार को भी जीवेनी, लोक तांको उपहास करिवे। स्मॉल को जानती नहीं, बुझे होची ना नहीं। सर्विस तो तांको लागि किछि जेंडर तो से मेंशन करि परिबेनी, सर्विस कोन करिवे। तेणु यही जजमेंट बल कहला ना सेमती करा जाई परिबनी। सेमानकर सबु प्रकार राइट्स अच्छी, सबु प्रकार जिनस को एक्सेस करिया पई। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द राइट टू सेल्फ परसिव्ड जेंडर आइडेंटिटी। ये कहला LGBTQ बा आमे कहबा ट्रांसजेंडर जो माने से माने निजे कहिबे से माने पुओ भलिया पुओ कि से झियो कि से माने थर्ड जेंडर से माने निजे कहिबे। कारण सबु ट्रांसजेंडर निजको झियो बोली कि भाबंतिनी कि समस्ते निजको पुओ बोली कि भाबंतिनी। ता भितर किछि लोकंकर बेसी मस्कुलाइन फीचर थाए से माने निजको पुओ बोली कि फील करंती, किछि मानकर थाए बेसी फेमिनाइन फीचर से माने झियो बोली कि फील करंती। तेनु एठी कोर्ट देइदला जजमेंट कहिला से माने जहा फील करचंती से अनुसार कहिबे। इट आल्सो provides for the right to self perceived gender identity, although the act has been criticized for its requirement that transgender persons undergoes a certification process to legally recognize their gender identity। पुणी कौच एक्ट टाक क्रिटिसाइज कराई कारण गोटे सर्टिफिकेट दरकार। सर्टिफिकेट कौन दरकार, से तो फिल कर से कह तापर आजिका दिन में आउ गोटे स्टेप माने चली डिस्कसन चली किसी स्टेप निया ही पर्यंत है जे आम देश रे सेम सेक्स रिलेशनशिप की जस्टिफाई कराई लीगलाइज कराई, किंतु सेम सेक्स मैरिज आसी ना पर्यंत सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देना मैरिज उपरे कि पार्लियामेंट भी लॉ करना। तेणु बर्तमान से कौच लास्ट है 5 नंबर पॉइंट सेम सेक्स मैरिज लीगलाइजेशन एक्ट एटा 2023 ongoing discussion। एठी लिखी मु while India has made strides in recognizing the rights of sexual minorities, the issue of same-sex marriage remains contentious. Several petitions have been filed in various high courts and Supreme Court seeking the recognition of same-sex marriage under existing laws such as the Special Marriage Act 1954 as of 2000। एटा चेंज कर दियो, प्रिंटिंग मिस्टेक। as of 2025 आज पर्यंत these cases are under consideration and there is an ongoing debate about whether the legalization of same sex marriage should be addressed legislatively or judicially। माने किए ताकू फास्ट जुडिशियरी ताकू लीगलाइज कर दबो तापरे पार्लियामेंट रे लॉ आसीबो ना फास्ट पार्लियामेंट लॉ करिकी कर दबो। एई आ ऊपर चलची डिबेट चलची। तापरे कंक्लूजन एठी मु लिखि दली द लीगल प्रोनाउंसमेंट रिफ्लेक्ट्स ए ग्रोइंग रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज इन इंडिया, मार्किंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स इक्वालिटी and non-discrimination। However, challenges remain, particularly regarding the social acceptance of sexual minorities and the implementation of these legal protections in everyday life. Continued advocacy and legal reforms are necessary
to ensure that the right of sexual minorities are fully realized and protected in India. ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲ ए क्वेश्चनटा पड़ीथिला 2021 मसीहार ओएस परीक्षा रे सोशल इश्यू अर्थात जीएस पेपर 1 रे 8 नंबर क्वेश्चन हिसाब रे आको डिटेल केमती तमे लिखिबो मु कहिदली इंट्रोडक्शन करिछि बॉडी करिछि कंक्लूजन करिछि सब क्वेश्चन आंसर एमती लिखिबो इंपोर्टेंट पॉइंट को ग्राफिकली ऑर्गेनाइज कर दबो आउ पिला माने स्टडी आईक्यू तरफरु वर्तमान सीरीज ऑफ यूट्यूब क्लासेस चलची जो मु पढ़ाऊँ तुम मानकर ओएस परीक्षा लगी पढ़ाऊँ सोशियोलॉजी इंग्लिश एसे एथिक्स जीएस पेपर 4 इवन सोशल इश्यूज दैट इज जीएस पेपर 1 इन एडिशन टू दैट मु भी तुमर 1-to-1 इंटरव्यू नेबी ओएस परीक्षा लगी एवं ता संगे मॉक इंटरव्यू करी बोर्ड रे बसिकी पैनल इंटरव्यू करेबी तेणु तुम जदि स्टडी आईक्यू एनरोलमेंट संबंधी कौन डाउट मनरे अच्छी ये जो वीडियो शेष में जो स्पेस अच्छी कमेंट दवापाई मेसेज लिखापी से देखो स्टडी आईक्यू गोटे लिंक अच्छी से लिंक रे क्लिक करदेले स्टडी आईक्यू सेंट्रलाइज नंबर मिल से नंबर रे तुम कथा है तुम जहाँ डाउट अच्छी यू कैन गेट योर डाउट क्लारिफाइड सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग द वीडियो थैंक यू वंस अगेन।